नमस्कार मैं राजीव पिला माने तो माने पई मैं सुंदर वीडियो ने आईसी तो डैफोडिल्स से तुम माने देखि परथुको व्हाइट बोर्ड रे so daffodils is the first poem of a +2 second year course तुम आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो इस जेको सिस्टम होना काहे कि इंग्लिश इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट तो तुमको डैफोडिल्स विषय पढियो पडिबो तो हम डैफोडिल्स विषय जानिबा तो डैफोडिल्स रे कोन जानिबा बिफोर गोइंग थ्रू द टॉपिक वी हैव टू नो इट फर्स्ट व्हाट डू मीन बाय डैफोडिल्स कोन and let's say something about the William Wordsworth and the main theme of the topic when the poet write this poem and what are the difficult words we have to write down in the blackboard I have written but that blackboard लिखि देछि तुमे माने लिखि नियो खाता रे तापर हम गुड गुड करी भलो भाबरे बुझिबा तो after learning so we are able to answer all the question in our examination because this is the question method by questioning method रे पढिबा जोचंदी तो प्रत्येक स्टैंडर्ड गोटे टाइम क्वेश्चन पचारिबा परीक्षा रे पद्धति पिला माने चेंज हे छि 2022 रे जो एग्जाम होबा जाउछि से एग्जाम रे तुमरो स्टैंडा पडिबो एथुर क्वेश्चन आसीबो तो जे कोन स्टैंडा पडिबो फल से प्रिपेयर हे सब क्वेश्चन आंसर दे परिबा चलो तो समय लॉस न करी आरंभ करिबा हमरो ए वीडियो तो डैफोडिल्स कोन व्हाट डू यू मीन बाय डैफोडिल्स डैफोडिल्स होछि बेल शेप्ड येलो कलर्ड फ्लावर व्हिच हैज अ स्वीट फ्रेग्रेंस डैफोडिल्स का कोन बेल शेप्ड रो येलो कलर रो फ्लावर होते तार वासना बहुत सुंदर मनोमुग्धकर तो सो दैट द विलियम वर्ड्सवर्थ वाज fascinated by this picture so bell shaped yellow colored flower having sweet fragrance is called daffodils is also a flower माने रखियो पिला माने ये गोटे फूल जहा कि हमर एई बडी घंटा टाइप रो आउ कोन ना हलदिया कलर देखियो गोल्डन येलो कलर तापर देखिया this poem is composed by the William Wordsworth the William Wordsworth the kid William Wordsworth the major poets of his time and William Wordsworth is the England's poet laureate England से होचंती गोटे poet आउ कोन the William Wordsworth used very simple language very common language to describe the nature and to describe the emotion and to describe the romantic thoughts in our hearts so William Wordsworth is a famous romantic poet so William Wordsworth explain here describes here what so how daffodils fascinated him once upon a time when William Wordsworth wandered lonely as a cloud he noticed that a number of daffodils are dancing in the cold breeze so that picture or that sights attracted the poet so poet was moved by that picture poet was fascinated by attracted by motivated by that picture so the poet decided to write a poem about the daffodils so let's go through the poem so before going through the poem we have to write down some difficult words we are going to study the first stanza and second stanza the first stanza and second stanza are cost word pila mane mu etre lekhi dechi you have to write down the difficult words and its simplest meaning and then we are going to study the first stanza and second stanza then first stanza ro amara second stanza cost word lekhi dechi you have to write down it then wandered means moving moving माने हमें गति करिबा भेल्स माने भेली एरिया उपत्यका एरिया पहाड़ रो मझी रो जो उपत्यका एरिया क्राउड हैला प्लेंटी प्रचुर परिमाण रे फ्लोटिंग हैला मूविंग टू एंड फ्रो माने आगे पछे गति करिबा ब्रीज हैला कोल्ड विंड माने ठंडा पवन सुलुसुलिया पवन होई परिबा तापर से मिल्क वे हैला द ब्रॉड पिला माने टेलिविजन आइची द ब्रॉड लुमिनस band of the stars ता माने जो तारा पुंज आकाश रे जो माला ये भासी बोलते गैलेक्सी रे सेटा जे हमर मिल्की वे तो मार्जिन हैला कोन एड्स बा बॉर्डर एरिया माने पाखो एरिया जोटा कि हम साइड बोली कहि परिबा आ स्प्राइटली मींस लिवली माने जीवंत भाବରେ डांस करछन एठारे के डैफोडिल्स तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी about the first stanza what tells the first stanza about the daffodils तो open your book at the page number टा केते माने 119 तो 119 पृष्ठ पले माने पढिबो एवं डैफोडिल्स रो बहिटा मध्ये खोली परिबो विषयटे ताबते बुझि पाइबो ठीक अछि बहिरे कोन लिखा छै हमरा सब बुझिबा गोटे
I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. देखिए हमें I wandered lonely as a cloud. I refers to whom? प्रत्येक धरने क्वेश्चन पचारिया पिला माने आंसर दबा निजे निजे मन माने तो देखिबा I refers to whom here? I refers to को I पर refers कौन सारे कहउछथि I is within the inverted comma and here I personified by the poet. So I refers to here the William Wordsworth who composed the Daffodils and who shares his feelings in that poem. Next is I wondered अर्थात जो टाफ हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड क्लाउड कौन पिला माने क्लाउड हला मेघ तो मेघ खंड जेमिति भासुथला काहा ऊपर ना द फ्लोट्स ऑन हाई ओवर भेल्स एंड हिल्स ए जो भेल्स और हिल्स रो ऊपर जेमिति हमर पिला माने मेघ खंड मान भासुथला विदाउट हैविंग एनी एम विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन in that way our poet William Wordsworth also wanders lonely at the foot area of the hill or valley. Here the poet describe एठारे ओडिया बोल जा बुझा तापर इंग्लिश में बुझबा एठारे पोएट पिला माने निजको पोएट निजको क्लाउड सहित तुलना करिसथि काहे कि क्लाउड सहित पोएट निजको तुलना करछथि से कहउछथि जेपरि मेघ खंड मान विदाउट एम किछि लक्ष्य न नेकी हमर ओवर द भेल्स एंड हिल्स भेल माने वैली एरिया रा और हिल एरिया रा ऊपर जेमिति विदाउट एम रे से माने भासी बुलुछथि ठीक सेही परि भाबरे के भासी बुलुछि ना हमर पोएट निजे कोन करूछथि हिल रो पाद देशरे एकुटिया कोन करूछथि बुलुछथि जेमिति एठारे क्लाउड ऊपर भासुछि सेमिति एठारे पोएट एकुटिया बुलुछथि क्लाउड रो किछि इंटेंशन नै मने कर भासुछि सेमिति पोएट कर विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन ही वंडर्स लोनली ओके so that's why the poet compare himself with cloud. So my question is that why the poet but why does the poet compare himself with cloud? My answer is as cloud floats on high over the valleys and hills at the same way the poet was wandering lonely on the foot of the hills, having no intention. So that's why the poet compared the clouds with himself. That's why. Next, the when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. When all at once I saw a crowd means so when the poet at once saw the sight of that daffodils, at that time he saw that a crowd, a host of golden daffodils. ता माने कि कहउछ कि हमें जे a crowd means हमें कोन बोले plenty numbers of daffodils are there. The poet while wandering lonely, the poet while wandering lonely as a cloud at that time he noticed that so many number of daffodils are there. Golden yellow color daffodils कारण daffodils has the color of the yellow color से तापा धारण करिछि सेति पय जे host of golden daffodils माने host माने group a group of golden daffodils are there are situated तो होया daffodils are उधर पिला मन daffodils से देखिबा beside the lake and beneath the trees the daffodils माने कोडी असति ना daffodils are beside the lake beneath the trees माने कलो this is a lake ए लेक पाखरे daffodils माने अछि आउडा कहिछि कोन ना ट्रीज जो अछि मतलब ट्रीज रो अंडर रे हमर कोन करिसथि ए daffodils माने अछि so my question is that where the daffodils now the daffodils were beneath the trees रो तळे and beside the lake रो पाखरे आउट क्वेश्चन कौन से देखिबा पाइथिले व्हाट डिड द पोएट सी हियर now the poet saw a so many number of a group of golden yellow color daffodils the next question are that fluttering and dancing in the breeze what are the daffodils doing at that time the daffodils are dancing
and fluttering means to and from motion आगा पछ होई कि ठंडा पवन रे डैफोडिल्स टा कोन करूची और भासी पड़ुची मतलब fluttering and dancing in the breeze. The daffodils are fluttering and dancing in the breeze. So this is the first main theme of the first stanza. The first stanza में आउ थ्री पिला माने भल भाबरे सुनिबा ओडिया रे सुनिबा और इंग्लिश रे कहबा तापर सेकंड stanza जिबा. तो फर्स्ट stanza में कोन बुझिले पिला माने जे पोएट एठारे निजको क्लाउड सहित कंपेयर करिसंती कारण क्लाउड जेमिति एकोटिया ऊपरे हमर हिल ऊपरे वैली ऊपरे भासी बुलुची सेबडी पोएट निजे हिल पाखरे एकोटिया कोन करूसंती माने बुलिबा को जायछंती. आउ कौन कहते से जिते बड़े बुलवाक जाइए से समय बहुत गुड़िया डैफोडिल्स को देखा पाई. डैफोडिल्स बहुत खुशी और डैफोडिल्स कौन देखा पाई बीनेथ द ट्रीज डिसाइड कले एंड एट दैट टाइम डैफोडिल्स आर डांसिंग एंड फ्लटरिंग इन द ब्रीज. So this is the one thing. तंदे होगा while wandering the poet noticed that the so many number of golden yellow colored daffodils having sweet fragrance are there. So the poet was fascinated by that picture. So the poet decided to stop here. The poet gazed and gazed to that picture. And at that time, the daffodils are dancing and fluttering in the breeze. This is the main theme of that poem, first stanza. And second stanza, turn over your face and open your book to 130. Continuous as the stars that shines and twinkle on the Milky Way. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of the way. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. देखिए हमें continuous as the stars that shine means कौन? Continuously. तो स्टार्स माने कौन साइन करते ट्विंकल करते मिल्की वे सेटा बुझी जति. तो मिल्की वे कौन पिला माने देखो मिल्की होची द ब्रॉड लुमिनस बैंड ऑफ कोन स्टार्स. तले हम कोन बुझिले मिल्की वे हला हमर आकाश रे जो दीपपुंज माने बहुत गैलेक्सी रे जो दीप माने करा जो उडे आकाश रे ए आकाश रे सपोज एडी सब स्टार माने सब लाइन लाइन उडे पाथ तयार कर देछन सेटा होची हमर मिल्की वे. एते हम क्लियरली बुझिबा ताले दीपपुंज अनेक जोडे के गैलेक्सी असन सेटा बुझि परिबा. से कहउछन स्टार्स आर शाइनिंग एंड स्टार्स आर ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग मींस जोडे के हमें ट्विंकल करिबा जोडे के हम चकचक करिबा जोडे के कोंडी जोडा तमे सब सुनि दियो पेला माने गीत ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो सही स्टार माने जोडे के हम ट्विंकल करछि. ट्विंकल माने कोन जोडे के हमर चकचक करछि दबदब होछि सेटा. तो हमर स्टार्स आर ट्विंकलिंग एंड स्टार्स आर शाइनिंग कोउटी ऑन द मिल्की वे continuously माने पूरा सब बेले. They stretched the never-ending line along the margin of the bay. They refers to whom here पिला माने तो they refers to the number of daffodils. A number of daffodils कौन करछंती are glittering, are shining when the sun shines falls upon it the golden yellow colored कौन करछि glitters. ताम से कहछंती the number of daffodils are glittering and which are situated in a never-ending line at the margin of the bay. Bay means हमरो जो हमरो एठी हमरो हम जेठी कहूना जे हमरो कोन जे हमरो बे ऑफ बेंगल कथा एठी बे माने बुझेबा जोटा तार साइड एरिया जोटा कि हमरो बॉर्डर एरिया कथा बुझेबा गोटे हदर गोटे बॉर्डर एरिया लेक रो बॉर्डर एरिया कथा बुझेबा. तामर सेठी कहइयो चाहउछंती कवि दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग. दे माने डैफोडिल्स. डैफोडिल्स स्ट्रेस्ड स्ट्रेस इन लंबी जाइछंती केमिति नेवर एंडिंग लाइन. सता जे पर डैफोडिल्स सरू नाही बहुत शेष पर्यंत जेमिति हमें तारा को देखि परिबाने अगणित सेमिति डैफोडिल्स अगणित नंबर रे बहुत बहुत बाडी के लंबी जाइछि. आउ गणिसी न एलोंग द मार्जिन ऑफ द पोएट टी कहइयो चाहइछंती as the stars are twinkling and shining in the Milky Way, the daffodils are stretched in a never-ending line along the margin of a bay. So that's why the poet compares daffodils with little star. Okay? The stars with the daffodil को poet एठारे compare करछथि. काहे कि ना as the stars are twinkling and glittering continuously on the Milky Way, in the same way the daffodils are also glittering and stretched in never-ending line at the margin of the bay. So that's why the poet compare
the stars with the daffodils. So my question is that why does the poet compare the daffodils with the stars? Answer the next. 10,000 saw at a glance, tossing their heads and slightly dance. 10,000 saw at a glance. Poet at a glance माने एक आखि पिछुड़ा खाली एक आखि बुले अंचल. So at a glance, the poet noticed that 10,000 numbers of daffodils are there. Are you agree with that? देखो से कोन पोएट थोरे गणिले 10,000 गणि पकेले नाही. दिस इज अ हाइपरबोला. दिस इज अ एक्सैगरेशन. हाइपरबोला माने मन बढ़ाणिया. एक्सैगरेशन माने अतिरंजित करी. अरे पोएट ना कवि जदि रंजित करिवे ना के करिवो ता माने एटे कवि कहियो चाहि जदि बहुत बढिया रेफरेंस दिला. बट एटे क्वेश्चन पसरिबो तो केतेटा रेफरेंस दिला हम कोन कहिबा 10,000 numbers of daffodils are there and they are dancing with lively dance. अर्थात स्प्राइटली मींस माने लिवली माने जीवंत भाबरे. एटे टॉसिंग देयर हेड. टॉसिंग माने कोन हम कहिबा टॉसिंग माने मुंड मुंड टॉस करिबा. त माने करे ए उडे daffodils ये उडे daffodils जते काय मूव करूछंती को डांस करते सेते बेला मुंड मुंड बाजी जाउछ. तो जो मुंड मुंड बाजी जाउछ सेटा टॉसिंग. So at that time the daffodils are tossing their heads and danced in very sprightly manner when the poet saw them, and the poet at once noticed that there are 10,000 number of daffodils there. So this time देखिबा पिला माने what are the main themes of the daffodils. Daffodils ର main theme कोन जानिबा. सेकंड स्टैंजा रे ओडिया रे बुझिबा तापर इंग्लिश रे सुनिबा. तो ओडिया रे कोन बुझिबा भलसे बुझ. जे daffodils मान जेमिति से कहउचंती स्टार्स माने मिल्क वे रे कंटीन्यूअसली जेमिति चकचक करूचंती. तो ठीक सही बड़ी daffodils कोन करूची ना नीचे हमर जो हमर बॉडी ना बॉर्डर एरिया रे बा मार्जिन एरिया रे लेग पाखरे से कोन करची ना नेवर एंडिंग लाइन स्ट्रेच रे की रहची. आउ कोन एका थरे का पॉइंट का देखिछनी 10,000 daffodils असल. आ से माने कोन करछ जे पवन होउची दे आर टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. तो दे में इंग्लिश में बुझिबा पिला माने त हम कोन करि परिबा एज स्टार्स आर ग्लिटरिंग एंड twinkling on the Milky Way. At the same way, the daffodils are glittering and they are stretched in never-ending line at the margin of the bay. And the poet has noticed that 10,000 numbers of daffodils are there and they are dancing with sprightly manners. This is the main theme of the second stanza. तो पिला माने आज को पढ़ा केमे लागि त म जानि नै. तुम मन केमे लागि जदि भर लागि था सब्सक्राइब करे को भूलिबो नै पिला माने. आउ जो नेक्स्ट दीटा हमर रहिला पार्ट जोडे स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 ताको म नेक्स्ट वीडियो रे को मन पई लेके आसीबी. तो पिला माने से पर्यंत टेक केयर. बाय बाय एंड कीप इट वाचिंग. शेष समय पे देखिथिबारु शेष पर्यंत अशेष धन्यवाद. मुराजी तो मन को धन्यवाद अर्पण करूची मोर वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु. तो ए वीडियो रे पिला मन जेबि हम पढिले से बुढी हम प्लस 2 सेकेंड ईयर पोएम्स पाइबा सहित आउ मध्य सिटी बीट रो एंट्रेंस रो जो मेथोडोलॉजी रीजनिंग मैथ ट्रिक इस हम पाइ परिबा चैनल ले सब्सक्राइब करबा पिला मन भूलिबो नाही. टेक केयर. बाय बाय.